हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं आपके पीएचडी और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो इनको टॉपिक सिलेक्शन में, लिटरेचर रिव्यू में, डाटा एनालिसिस और राइटिंग असिस्टेंस में। ठीक है, क्योंकि टॉपिक सिलेक्शन इज टू मच डिफिकल्ट फॉर एवरीवन एक्चुअली। ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो लिस्ट आउट की हैं, जो आपको ये 5 और 6 सिनेरियोज जो यहाँ पर लिखे हैं, लाइक आपने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा टॉपिक है विच इज इन डिमांड टुडे, एंड लिटरेचर रिव्यू एंड डाटा एनालिसिस में कौन सी जो है ना वेबसाइट्स हैं आपको हेल्प आउट करती हैं। देन राइटिंग असिस्टेंस, यू हैव डिसाइडेड योर टॉपिक, you have done your literature review, you have done your data analysis. Now the next most important part for everyone, where you need writing assistance, right, where you need to you conclude all the facts and figures, and whatever you have done in first 3 parts, you are going to actually list down everything in your final thesis, right? So if your writing is not good enough, then there is no point of great selection of topic and great literature review, right? And then last part is citation. It's most important thing, right? You cannot miss this citation. In your project, right? And then collaborations too. Let's say you are working with the with 2 or 3 students in your group, and then you need some collaborations, right? Collaboration means कि आपको उनके साथ डिस्कस करना है, कि आपने कुछ फाइल्स शेयर करनी है। सो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, जो आपको हेल्प आउट करे कि आपने इसको कोलैबोरेट करना कैसे है, राइट? सो इस तरह से मैंने ये सब चीज़ों के लिए एक प्रेजेंटेशन, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, यू कैन सी। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे द फर्स्ट कॉलम इज अबाउट पर्पस, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है, एंड देन द वेबसाइट नेम। ठीक है। फॉर टॉपिक सिलेक्शन यहाँ पर मेरे पास 3 वेबसाइट्स हैं, रिसर्च गेट, प्रोक्वेस्ट and Google Scholar, right? And then in the next further, in the next third column, I have actually given you the website's link, right? So अगर आप चाहते हैं कि मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूं, so I will do this as well. So आपको फाइनली एक्चुअली करना क्या है, वन बाय वन you just go through these websites. Some of these websites may be required your sign up. Some of these websites may not required it. So if it's required, it's okay. You can just go through these things. Otherwise, you can skip the point. And the next point is literature review. For literature review, there are the 3 websites: GSTron, PubMed, Science Direct. And for data analysis, there are other 3 websites: SPSS, IBM, RStudio, SAS, and then writing assistants. Right? If you're not actually writing your thesis or something like that, still you can use this writing assistant in your daily basis assignments. There are 3 websites most commonly used. Grammarly will help you out in your sentence structure, your words, spelling mistakes, and all these things. And Hemingway Editor, there is another website. And the third one is Purdue Online Writing Lab, right? It's most amazing websites for your undergrads and for grads and for postgrads as well. So citation management, Zotero, Mendeley, EndNote, and then for collaboration, Trello, Google Drive, and Slack. Right? Google Drive will just help you out to upload all those things and just share those things with your supervisor and with your other members, but Slack will help you out to actually communicate with your friends as well, right? It's just like a WhatsApp tool. So if you need more help, and if you want to know more about all those websites, that why we are going to use and how we are going to use this, I'll be more happy to share my experience with you. I can further guide you step by step if you required it, but I think so you can do you can do actually these things. So, do you have any question? Oh, that's great if you don't have any question. So, I'll be sharing this document with you if you need it. If so, that's all for today.